4 साल की माफी, 19 साल हो गए। मैडम 20 साल तो होने हैं ना अभी। 26 जनवरी को छूटेंगे आप, जनवरी में छूट जाएंगे आप। जनवरी है उसका, 14 अप्रैल है। 2 बार हाजिरी माफी होती है, 14 अप्रैल तक तो हो ही जाएगी 100%। छूट मिला के 19 साल हो गया इसको जेल में। 20 साल करना है। एक्चुअल इंसान 13 साल 1 महीना। 4 साल की माफी, 19 साल हो गए। मैडम 20 साल तो होने हैं ना अभी। 26 जनवरी को छूटेंगे आप। माय लॉर्ड इनोसेंट है माय लॉर्ड। सुनने को हमें मना ही नहीं है, हम सुनने को तैयार हैं। माय लॉर्ड अगर आपके केस में मेरिट है तो सुनाइए, वी आर रेडी टू हियर यू। एंड अगर आपको लगता है मेरिट नहीं है तो जनवरी तक का समय और काटिए, जनवरी में छूट जाएंगे आप। जनवरी है उसका, 14 अप्रैल है। 2 बार हाजिरी माफी होती है, 14 अप्रैल तक तो हो ही जाएगी 100%। जनवरी में हो जाएगा सर, हैं? हो जाएगा 6-7 महीना है। जनवरी में नहीं होगी भाई, हाँ अप्रैल में होगा। अप्रैल में होगी। 9 महीने बचे। हाँ, गलत जानकारी मत दो ना, पक्षकार को बताना पड़ता है। देख नहीं पाए 9 महीने। माय लॉर्ड विधिक सहायता से है तो इतना तो माय लॉर्ड निवेदन था मेरा कि कर सकते हैं। नहीं, विधिक सहायता से है। अगर मैं आपसे क्या कहा, पहला पॉइंट, हम आपको सुनने से मना नहीं कर रहे। दूसरा पॉइंट, आप अगर विधिक सहायता से हैं या अदरवाइज यूर काउंसिल फॉर द कोर्ट ऑफ द कोर्ट, यूर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, अगर आपको लगता है कि मेरिट्स पर केस अच्छा है तो प्लीज जरूर सुनाइए। फिर ये 10 महीने भी क्यों रखना किसी को जेल में। और अगर आपको लगता है मेरिट्स पे कमजोर है तो इस रिपोर्ट के मुताबिक आप अप्रैल 26 में छूट जाएंगे, क्योंकि 14 साल का एक्चुअल इनकार्सरेशन हो जाएगा और रिमिशन के साथ 20 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ये बता रहा हूं मैं आपको। तीनों बिंदुओं को जोड़ के आपको जो निर्णय लेना है वैसा बता दीजिए। वी आर रेडी इन ऑल दी सिचुएशंस। माय लॉर्ड बहस करना चाहूंगी। हाँ करिए ना प्लीज, ये देना भाई फाइल। माय लॉर्ड प्रोसिक्यूशन स्टोरी इज बैक इन ऑर्डर। पैरा नंबर 3। संक्षेप में अभियोजन प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुष्पा बाई आरोपी महेश की भाभी है और ग्राम सिंधगोवा में रहती है। घटना दिनांक 30/3/2011 के सुबह लगभग 11 बजे अपने घर पर थी तथा ससुर गोपाल भट्ट मंदिर से पूजा करके घर आए थे। तभी आरोपी की सास गणेशी बाई से बोला कि उसे खर्चे के लिए पैसे दो। इस पर गणेशी बाई ने पैसे देने से मना कर दिया तो आरोपी ने गणेशी बाई के सिर पर लाठी मार दी। ससुर के मना करने पर आरोपी ने उन्हें भी हत्या करने के आशय से सिर में लाठी मार दी, जिससे वह गिर पड़े। इसके बाद भी आरोपी ने उनके सीने में लाठियां मारी, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। ससुर का नाम क्या है? ससुर गोपाल भट्ट। गोपाल भट्ट और मदर गणेशी बाई मालूम। हाँ वो तो गोपाल भट्ट इज डिजीज, गणेशी बाई इज इंजर्ड। मालूम। मालूम FIR की है आरोपी के भाभी ने। हाँ मालूम उन्होंने अपने पुष्पा बाई ने। पुष्पा बाई मालूम। हाँ। तो 2 आई विटनेसेस हो गए, पुष्पा बाई और गणेशी बाई। मालूम। ठीक है, पर पुष्पा गणेशी बाई इज PW2 गणेशी बाई PW2 PW1 पुष्पा बाई। ठीक। मालूम। और डॉक्टर कौन है जिन्होंने कि गोपाल भट्ट जी का पोस्टमार्टम किया है? मालूम PW6 डॉक्टर MK पॉल। एनके पाल। मालूम डॉक्टर MK पॉल अपने उसमें PW6। चलिए अब एक एक करके चलते हैं। PW1 पुष्पा बाई से शुरू करते हैं जी। इज इट अ केस ऑफ सिंगल इंजरी? नो है? नो नो। पुष्पा बाई ने पैरा 3 में कहा है। सर में एक ही तो इंजरी है, वो तो 3 तो उन्होंने सर का पहले हेमाटोमा दिखा दिया, फिर लेफ्ट सबड्यूरल फ्रैक्चर दिखा दिया। वो इंजरी तो एक ही है सर पे। माँ भी कह रही है सर पे एक लाठी मारी। चोट सीने में है, पर वो लाठी की है कि नहीं वो थोड़ा सा वो डाउटफुल है, कह नहीं रहा डॉक्टर सर। रिपोर्ट डॉक्टर ने बोला है कि मतलब क्रॉस में आया है, बस क्रॉस। उसने कहा सीने में वो चोट गिरने से नहीं आ सकती। 304 पार्ट 1 में जाएगा, पार्ट 1 में। 11 महीने बचा दिए आपने। फाइनली कर दीजिए। फाइनली कर जी सर। दिस अपील इज फाइल्ड being aggrieved of the judgment dated 22/3/2012 passed by learned Sessions Judge Sagar
in Sessions Case number 428/2011, whereby the trial court has convicted present appellant under Section 302 IPC and has sentenced him to undergo life imprisonment with fine of ₹1,000 with default stipulation of 3 months RI. This is simple imprisonment. Next one. It is submitted that appellant is son of the deceased Gopal Bhatt. Full stop. As per the prosecution story, incident took place on 30/3/2011 when appellant was demanding some money from his mother Ganeshi Bai, PW2, when deceased Gopal Bhatt had arrived from a mandir and he intervened. Full stop. Since altercation was already going on between the appellant and Ganeshi Bai on deceased intervening in the matter, comma, a lathi blow was caused on his head, as is admitted by PW2 that only single lathi blow was given to the deceased Gopal Bhatt. Full stop. It is submitted that it is true that Ganeshi Bai had sustained several injuries on account of marpeet which was caused by the appellant, but the fact of the matter is that appellant has not been convicted for any offence as a result of injuries caused to Ganeshi Bai. नहीं है ना conviction? Next one. Therefore, it is submitted that present being a case of single injury, ये भी मजा के चार्ज बनना चाहिए था गणेशी भाई के संबंध में, और चार्ज बन के उसका ट्रायल होना चाहिए था, उसको भी अलग से पृथक से सजा देनी चाहिए थी. ये लोग तो बड़े वरिष्ठ जज थे. क्या लिखा? 325 में दिया 325 में कन्विक्शन किया है. Yeah, ma'am. पैरा नंबर 35. तो वही तो पूछ रहे थे, तो वो ये हटा देना भाई, he has not been convicted. तो 300 ऊपर सेंटेंस में जोड़ ले, तो 325 में भी कन्विक्शन है. लेकिन 325 में सेंटेंस कहाँ है? वो लिखा है 3 year rigorous imprisonment. 325 में सेंटेंस तो अलग से लिखेंगे ना. लिखा है साहब. अच्छा सॉरी, 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष 3 वर्ष का रिगरस इम्प्रिजनमेंट, फाइन ऑफ ₹1,000 1,000. with default distribution of 3 months simple imprisonment. ठीक चलिए. हाँ, क्या लिखा? It is submitted that since single injury was caused, comma, there was no premeditation and no intention of causing death of Gopal Bhatt, case will fall under Section 304 IPC. Next one. There is no query report in regard to the lathi which was seized at the instance of the appellant. Next paragraph. Thus, it is evident that present is a case of single injury. Full stop. Next, Supreme Court in Stalin versus State, represented by Inspector of Police 2020 का 9 SCC 524 has held that death due to single injury caused by accused would not attract Section 302 full stop. It is held that referring to earlier judgments of Supreme Court, it is held that there is no hard and fast rule that in a case of single injury, comma, Section 302 IPC would not be attracted. Full stop. It depends upon the facts and circumstances of each case. Full stop. The nature of injury, comma, the part of the body where it is caused, comma, the weapon used in causing such injury, comma, are the indicators of the fact, comma, whether the accused caused the death of the deceased with an intention of causing death or not. Full stop. It cannot be
down as a rule of universal application that whenever the death occurs on account of a single blow, comma, section 302 IPC is ruled out. Full stop. The fact situation is to be considered. ये कौन आकाशवाणी कर रहा है? किसका मोबाइल है भाई? बेसिक ऑनेस्टी तो रखो, आप इंटर्न हो, आ जाओ, डरो मत, इधर आइए, आपका मोबाइल बजा था, आइए आगे आइए, आगे आइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। क्या शुभ नाम है आपका? नीलेश। नीलेश जी, I'm क्या sorry, करते हो? sir. नहीं नहीं, कोई बात नहीं, करते क्या हो? सर अभी लॉ इंटर्न हो। अभी से यार मोबाइल बजा रहे हो, जब वकील बन जाओगे तो क्या करोगे? क्या पता, बैंड बाजा बजाओगे? सॉरी कौन से ईयर में हो? सर, सेकंड ईयर। हाँ तो ध्यान रखो, बैठो आराम से बैठो, लेकिन ध्यान रखो, साइलेंट पे लेकर आओ मोबाइल, नहीं तो मत आओ कोर्ट के अंदर, ठीक है? हाँ, कहाँ छोड़ा था? Has to be considered in each case, comma, and the events which precede, comma, will also have a bearing on the issue, comma, whether the act by which the death was caused was done with an intention of causing death or knowledge that it is likely to cause death, but without intention to cause death. Full stop. It is the totality of the circumstances which will decide the nature of offense. Next paragraph. In the present case, facts of the case reveal that appellant Mahesh Bhatt demanded money from his mother, Ganeshi Bai, PW2. Full stop. Ganeshi Bai denied, refused grant of money when deceased Gopal Bhatt had returned from a temple. Full stop. Altercation between Ganeshi Bai and Mahesh was already underway when Gopal had returned. Full stop. Thus, it appears that appellant had caused a lathi blow out of heat of the moment, as a result of which, as it has come on record, that he was a habitual consumer of cannabis and alcohol. Full stop. Thus, it can be inferred that he had no intention to cause death, but had knowledge that his act may cause death. Full stop. Therefore, when these facts are taken into consideration in the light of the three judges' bench judgment of Honorable Supreme Court in Stalin, then the case of the appellant shall fall under second part of section 299 IPC, which says that if an offense is committed without intention but with knowledge that he is likely by such act to cause death, then it will be culpable homicide. Full stop. Next paragraph. It is settled law that culpable homicide is the genus and murder is its species, and all murders are culpable homicides, but all culpable homicides are not murders, as held in Rampal Singh versus State of Uttar Pradesh 2012 का 8 SCC 289. Full stop. When this aspect is taken into consideration, then in absence of intention but presence of knowledge, appellant's act will fall in part 2 of section 304 IPC. Full stop. Accordingly, his sentence is part 2. Full stop. Same is the ratio of law laid down by Supreme Court in Jogotram versus State of Chhattisgarh 2020 का 9 SCC 520, where it is held that case of a single lathi blow will fall under exception 4 to section 300 IPC. Full stop. And these facts are taken into consideration, then appellant's conviction is maintained. Conviction under section 302 is modified to one under section 304 part 2 IPC. Full stop. His sentence is also accordingly modified, and he is directed to undergo imprisonment for 10 years with
फाइन ऑफ रुपीज 1000 दिया था ना नीचे ट्रायल कोर्ट एक बार 1000 with default stipulation of 3 months RI. Full stop. सिंपल As far as conviction under section 325 IPC is concerned, it is maintained as it is. Accordingly, if appellant has already undergone 10 years incarceration, then he may be released if not required in any other case. In above terms, appeal is allowed and disposed of. माना